Let me see if I can dip into that audio coming in of the lawyer speaking outside. से दे दिया गया है और मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ प्लॉट अयोध्या के अंदर अन्यत्र देने की बात कही गई है। मैंने पहले भी कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जिस मामले में अयोध्या एक्ट 1993 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन्वोक कर सकती है। आज जजमेंट में 1993 की जो अयोध्या एक्ट है उसको इन्वोक करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 6 और 7 में यह आदेश दिया है कि आप एक स्कीम बनाएं, उस स्कीम को बना करके जो रामलला को वो जो डिस्प्यूटेड है 2.77 एकड़ उनको दिया जाएगा और मुस्लिम पक्ष का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो Okay, so that's the sum and substance of what we know so far. If you have just joined this broadcast or are tuning in or trying to find out what the Supreme Court has said, what the Chief Justice of India has said, a temple will be coming up on the disputed land in Ayodhya. The entire disputed land will be given to a trust and to the central government effectively, and the central government receiver via this trust, where then, a temple. सरकार को कहा है, कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 6 और 7 ऑफ अयोध्या एक्विजिशन एक्ट और वहाँ मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सूट नंबर 4 को पार्टली डिक्री किया है और उनको एक ऑल्टरनेटिव लैंड देने की आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए जो 5 एकड़ की होगी और वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करें। अयोध्या में होगी या अयोध्या से बाहर होगी, ऐसा उन्होंने कहा अयोध्या में एक प्रोमिनेंट जगह पे वो जमीन दी जाएगी 5 एकड़ की। अयोध्या के अंदर अयोध्या के एक प्रोमिनेंट जगह पे किसी भी खास जगह पे 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्षकारों को सूट नंबर 4 में दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। जो मालिकाना हक है वो कुछ भी हो, लेकिन अगर उस जमीन पर मालिकाना हक उसका साबित नहीं हो पाए, इस पर क्या कहना है? उनका मालिकाना हक साबित नहीं हुआ है और इसके बावजूद कोर्ट ने, चूंकि उन्होंने नमाज पढ़ी थी कुछ दिन, उनको एक अल्टरनेटिव लैंड देने का प्रावधान किया है। सर, आपके किस से हैं? हिंदू महासभा हरिशंकर जैन। हिंदू महासभा के एडवोकेट हरि Could we respect it? There is no question of, and we appeal to the nation to observe restraint and peace. Right. That the entire country should remain peaceful, and there should be no. Sir, the Supreme Court has reposed the faith. We will see. We will examine. The Supreme Court has reposed the faith in the center to form a trust. What do you want to do that? No, see, we are not taking questions. We have just given. I will again address the media at 34 Ashoka Road. Sir, just a small reaction. You fought valiantly for the Muslims. सब बातें वहीं कहेंगे, हम यहाँ कुछ और नहीं। 34 अशोका रोड पे आइए, वहीं बैठते हैं। I'm continuing to come to you from the Supreme Court lawns, and now joining me is my colleague Abhimanyu Sharma. He was, of course, inside the courtroom where the historic verdict had been delivered by the 5-member bench. Abhimanyu, first of all, it was, of course, unanimous. You were there. You can bring us the first-hand account of what transpired in the court. We've been reading your updates, and that is what we have been discussing on the channel as well. So it is clear a 3-month time to form a trust, and of course the Nimori Akhara will be given rights, and a 5-acre site to build a mosque. Alternate site. Exactly, and the Supreme Court, the judgment lasted for more than 30 minutes initially, according to what the CJI had stated, and relying upon that itself, he began from when the suit had begun and when the dispute had begun initially, and there were several travel accounts which were referred to by both the sides, by the Hindu side as well as the Muslim side. Also, he had claimed that it was undisputed within the Hindu sentiment and faith that Lord Ram was born on that place itself, right beneath the dome where the Babri Mosque stood before it was demolished in 1992. Also, he took into consideration that no side could unequivocally or undisputedly prove that they had a complete control and possession over the land. Neither could the Muslim side, that is the Sunni Waqf Board, clearly indicate that they had undisputed possession over the land, since there was adverse possession to a large extent, which they were claiming.
saying, however, to claim adverse possession, they needed to have continuous and undisputed possession of land, which they could not indicate, on the basis of which the apex court relied on the Hindu faith and sentiment, and also the fact that there were several travelogues and the Hindu faith which had... Okay, but Abhimanyu, tell me something. Was it only the Chief Justice of India who pronounced the verdict? The other 4 members, did they speak at all? We've been reading our updates. We know what, of course, the unanimous verdict is. But take us inside the courtroom and what those 30 minutes felt like. Well, as soon as we entered the courtroom, of course, it was jam-packed. Not only journalists, but lawyers. It was bursting to the seams. There were even people spilling over to the outside of the courtroom. And at around 10:20... साथ ही साथ सामाजिक ताना बाना भी इसके परिणाम स्वरूप मजबूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं जनता से भी ये अपील करूंगा कि सभी शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयत्न अपनी तरफ से करेंगे और इस जजमेंट को पूरे धैर्य, उदारता के साथ सभी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो लोकतांत्रिक देश होने के नाते सबने उसको स्वीकार करना चाहिए और शांति और सद्भाव वही कायम रखना चाहिए। सभी लोग शांति और सद्भाव कायम रखें, यही मेरी प्रार्थना है।